Hi, good morning class. Welcome to my next lecture of Communication for Management, lecture 3 of unit 1. So, in this lecture, we are going to discuss about the 7 C's of communication. That what are the 7 C's which should be keep into consideration while communicating in a professional manner or while communicating in any of the business organization. So the first is, these are the 7 C's of communication: correct, complete, concrete, concise, consideration, courteous, and clear. So these are the 7 C's of communication, and this is we are going to discuss one by one in detail. The first is clear. As the word itself makes a sense that clear means ekdam saaf, which should be easily understandable by the person to whom you are communicating. आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं रेसिपिएंट को, वो एकदम साफ और सरल होना चाहिए. सो दैट इज नोन एज अ क्लियर. Whatever the message you want to convey to the receiver, that should be clear, and there should be a clarity in the message. So that is known as a clear. The message should be clear and easily understandable to the recipient. कि अब मैं आपका ये लेक्चर ले रही हूँ, तो इसमें आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेज in my explanation, Hindi and English, just to make a clarity in the content which I have given in the form of slides. तो जो भी मैं explanation में हिंदी का भी यूज़ कर रही हूँ और इंग्लिश का भी यूज़ कर रही हूँ, just to make my students understand what I want to deliver in this lecture, what the content I have given. जो भी मैंने content दिया है उस कंटेंट को वो आसानी से समझ पाएँ, इसके लिए मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी. सो दिस मीन्स क्लियर. whatever I want to convey in the form of lecture, so for that I am using both the languages in my explanation, just to make the clarity in the content what I am delivering for my students. So that is known as clear. Second is, the purpose of the communication should be clear to the sender, then only the receiver will be sure about it. What is the purpose of communicating? आप जो भी मैसेज रिसीवर को भेजना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या है? So the purpose should be clear in the mind of the sender, that why he is sending that message to the receiver. So, and then the only receiver will sure about it, कि जब sender sure है कि वो receiver को ये message क्यों भेज रहा है, for what purpose, if he is clear about the purpose in his mind for the message which he is sending to the receiver, so then only the receiver will be sure about it, that yes, this is the content which is being sended by the sender. The message should emphasize on a single goal at a time and shall not cover several ideas in a single sentence. Yes, whatever the message you are giving to the receiver, there should be a proper use of words. There should not be too many sentences during the communication or during the message delivering. And it should be a goal oriented, that what is the goal of delivering that message for the receiver, what is the goal, what is the purpose, that should be clear in the mind of the sender as well as in the mind of the receiver.
इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर कि जब दोनों के माइंड में क्लैरिटी है, जो भी मैसेज दोनों के बीच में एक्सचेंज होने वाला है, सो इट मेक्स द बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. Complete clarity of thoughts and ideas enhances the meaning of message. So both the sender and the receiver should have complete idea that what is the idea behind conveying that message, so it becomes meaningful. Clear message makes use of exact, appropriate and concrete words. There should not be use of such words कि जिसकी मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी खोल के बैठना पड़े. दैट मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, सो दैट इट मेक्स द मैसेज understandable for the receiver. So these are the points which should be in the clear. Whatever the content, whatever the message which the sender wants to deliver to the recipient or to the receiver, that content should be clear, precise. There should be a use of proper words, meaningful, and most important that the purpose of that message should be clear in the minds of the receiver and the sender. Second is correct. Whatever the message you are giving, whatever the message you are delivering, that should be correct. That means there should not be a single mistake in the message which you are going to deliver to the receiver. कि आप जो भी मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं उसमें कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए. The message should be correct. That is, a correct language should be used, and the sender must ensure that there is no grammatical and spelling mistakes. Yes, the way or the mode in which you are communicating, that mode, in that mode the message should be correct. There should be a use of proper language, and there should be a use of proper spelling, and there should not be a grammatical mistake in the message which the sender is going to give to the receiver. Also, the message should be exact and well timed. It should be precise and short. The correct messages have a greater impact on the receiver, and at the same time the morale of the sender increases with the accurate message. Suppose the lecture, मैंने आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर लिए हैं, बीकॉम में, एमकॉम में और एमबीए में, तो सब में मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हैं. तो whatever I am delivering, so the mode of delivery which I am using, the words which I am using, the content which I am using in my lectures or in the PowerPoint slide, so all this and the explanation with an example, जो भी मैं examples use कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, so that will create a picture in your mind कि हाँ संगीता मैम का lecture है तो ये ऐसा होगा. So it helps in delivering a positive impact in the mind of the receiver. And if the receiver is having a positive impact for the message which the sender is sending, so it also increases the morale of the sender कि sender जो बात कहना चाहता था वो करेक्ट फॉर्म में क्लियर तरीके से रिसीवर तक पहुंच गई है. If the communication is correct, it boosts up the confidence level. If the communication is correct, it helps in increasing the confidence level of the sender. Correct message has a greater impact on the audience and readers. Yes, whatever I am delivering in the form of lecture, so when the students are going through this lecture, then it will have a positive impact in the minds of the students. For me, students are the audience.
it checks for the precision and accurateness of facts and figures used in the message. The most important thing which you have to keep in mind, what are the facts and figures or examples you are using in the message that should be correct and accurate. It makes use of appropriate and correct language in the message. So these are the points which should be keep in mind while delivering the correct message from the sender to the receiver. Third is complete. Complete means that all the relevant information which the sender wants to convey, that should be completed, that should not be leave in behind, in between, कि आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बात आप पूरी तरह कम्युनिकेट करके तब मैसेज को क्लोज करेंगे. If you have closed the message in between and the communication is not complete, then there is an ineffective communication. आप जो भी communication आपने शुरू किया है, that should be completed in a given period of time. So never leave the communication incomplete. Always complete the communication and then leave for the next work. The message should be complete, that is, it must include all the relevant information as required by the intended audience. What the audience actually want, and that you have to give to the audience in a complete manner. So that is known as a complete. कि audience आपसे क्या चाहती है, you have to give that to the audience, but in a complete form. The complete information gives answers to all the questions of the receivers and helps in better decision making by the recipient. What actually audience want, if that content you are delivering completely, then it helps in better decision making process for the recipient. Complete communication develops and enhances reputation of an organization. If the communication is complete, then it helps in the growth of the organization. Moreover, they are cost saving as no crucial information is missing and no additional cost is incurred in conveying extra message if the communication is complete. सपोज आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बात करते करते आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो करना भूल गए, तो दोबारा आपको उस पर्सन के पास जाना पड़ेगा, दोबारा उसको उसी स्टेट ऑफ माइंड में लाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट योर communication. So what is the result of this exercise? Result is कि हो सकता है कि दोबारा वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट ही ना हो सकता है कि जब आप उससे दोबारा अपना इनकम्प्लीट मैसेज कंप्लीट करने के लिए आप उससे दोबारा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी स्टेट ऑफ माइंड ही ठीक ना हो और वो आपका मैसेज समझ ही ना पाए. सो यू हैव टू ऑलवेज complete the communication without any additional extra message. A complete communication always gives additional information wherever required. It leaves no question in the minds of the receiver. If you are giving complete communication, then it leaves a positive impact in the minds of receiver without any question. Complete communication helps in better decision making for the audience, readers, receiver of the message, as they get all the decision and crucial information. ऑडियंस को जो चाहिए था, अगर आपने वो सब कुछ ऑडियंस को अपने मैसेज में दे दिया है, so that communication is known as a complete communication. And complete communication helps in better decision making process. It persuades the audience. Persuades means that the audience, the speaker, the sender is liked by the audience. So what are the 3 C's which we have discussed?
clarity, clear and complete. इससे पहले हमने क्या कहा था? Correct and the first is clear. So the 3 C's which we have discussed up to now, the message should be clear, the message should be correct, that means without any mistake, and that mistake can be spelling mistake or a grammatical mistake. And third is there should be a complete message by the sender for the receiver. Fourth is concrete. Concrete, that means the message which you want to deliver should be clear and there is no chance of misinterpretation, कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं उसको misinterpret करने का कहीं भी कोई chance ना रहे. So that is known as concrete. Concrete means to the point, where there are no chances of doubts in the minds of the recipient. The communication should be concrete, which means the message should be clear and particularly such that no room for misinterpretation is left. That means whatever the content you are delivering to the audience, that should be clear, that the audience should not have any doubt against the message which you have given. फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये आईफा अवार्ड्स होते हैं, ये सारे अवार्ड्स होते हैं, तब क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी स्पीच लिख के ले जाते हैं, या किसी भी मंत्री को अगर ऑडियंस को फेस करना है तो वो काफ़ी लंबी लंबी स्पीच लिखकर एक पर्चे पर लिख के ले जाते हैं और क्या करते हैं कि वहाँ डाइस बोर्ड पे जाकर वो पर्चा पढ़ते हैं. सो whatever the content which that minister is delivering to the audience, so that should be complete, correct and clear. That means whatever the speech is containing, all the facts and figures should be checked twice or thrice before delivering in front of audience, so that there is no chance of misinterpretation in the minds of audience. आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, that message should be clear in the minds of the audience and it should be relevant with the facts and figures which you are using in support of your message. All the facts and figures should be clearly mentioned in a message so as to substantiate to whatever the sender is saying. For example, कि अगर हम किसी भी रिसर्च प्रोग्राम में या किसी भी रिसर्च पेपर में अगर हम कोई भी कंटेंट यूज़ करते हैं किसी भी दूसरे ऑथर का, तो हम क्या करते हैं, उस ऑथर का नाम फुट नोट में लिख देते हैं, फुट नोट 1, फुट नोट 2 एट द बॉटम ऑफ द पेज, जिससे अगर कोई वो कंटेंट पढ़ेगा तो उसे ये ना लगे कि हमने किसी की रिसर्च को या किसी के वर्क को चुराया है. तो हम क्या करते हैं, उसको फुट नोट में मेंशन कर देते हैं रेफरेंसेस में कि दिस facts and figures have been collected from this and this article at page this, volume this. तो इससे क्या होगा, that जो भी आपने डेटा यूज़ किया है अपनी रिसर्च वर्क में, that is concrete, और वो किसी भी तरह का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा जब रीडर्स उसको पढ़ेंगे. So footnote can be the example of concrete. Whatever you are using, whatever the data analysis you are using in your research, that is up to the mark. What are the references you are using in your project, that is up to the mark. You have already mentioned the website, the author's name, the book name, the volume, the page number. That means those references are correct, and if any receiver wants to check, he or she can check that at any point of time. So that is known as
concrete. Whatever you have used, that should be concrete and to the point, and it leaves no misinterpretation in the minds of the audience. It is supported with specific facts and figures. Whatever the facts and figures you are using in your communication, that should be to the point. It makes use of words that are clear and that build their reputation. Concrete messages are not misinterpreted. If the message is right, correct, to the point, if the facts and figures are supporting your message and it is being cross-checked once and twice, and if you have mentioned in the references, if you have taken all these things into consideration for your message which you want to deliver to the recipient, that means your message is concrete. That means there is no chance of misinterpretation in the message which you want to deliver. Fifth is concise. Concise means the message should be to the point. कि आप जो भी कहना चाहते हैं बस वही हो और कुछ भी ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन आपने स्टोरी इतनी ज़्यादा घुमा दी, लेकिन जो मैसेज आना चाहिए था आपने वो मैसेज ही नहीं कहा है, तो क्या होगा? आपका जो मैसेज है वो लेंदी हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और रिसीवर उसको समझ नहीं पाएगा. So concise means the message should be precise and to the point. Whatever you want to deliver, deliver that message to the point. Means इधर उधर कहानी बनाने की बजाय आप वो चीज़ बोलिए जो चीज़ आप एक्चुअली बोलना चाहते हैं रेसिपिएंट को. The sender should avoid the lengthy sentences and try to convey the subject matter in the least possible words. Yes. The sender should avoid using lengthy sentences or difficult words in the message which is being sent by the sender to the receiver. And it should use least possible words, or the sender should use those words which are easily understandable by the person who is going to receive that message. तो अगर आप कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं किसी को या कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन में आपका मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए. उसमें देयर शुड बी यूज़ ऑफ इजी वर्ड्स, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, not too much lengthy sentences. So these things you have to keep in mind. Then your communication should be concise. For example, during my explanation मैं क्या करती हूँ कि बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल डेली लाइफ से रिलेटेड आपको देती हूँ, so that the topic can be easily understandable by the students to whom I am delivering this lecture. कि मैं कोई भी आपको टाटा बिरला का या बड़ी बड़ी कंपनीज़ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देती हूँ, मैं आपका डेली लाइफ से रिलेट करती हूँ उस टॉपिक को. क्योंकि अगर हम टॉपिक को आपकी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, सो इट इज़ वेरी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से. तो ये कहलाता है आपका कंसाइज, कि आप जो भी बात रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं, दैट शुड बी टू द पॉइंट, प्रिसाइज. There should not be use of lengthy sentences. There should be use of limited words, and those words which are being easily understandable by the recipient. The short and brief message is more comprehensive and helps in retaining the receiver's attention. So the content which you are delivering, that should be short, so that it helps in retaining the receiver's attention. कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाते हैं और कुछ स्पीकर्स
जो है वो ऑडियंस को से कनेक्ट नहीं बना पाते, और कभी कभी ऑडियंस बहुत बोर हो जाती है. द ऑडियंस यूज टू लुक आफ्टर द वॉच कि कब टाइम ख़त्म होगा और कब हम यहाँ से जाएंगे. लेकिन कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही ऑडियंस से कनेक्ट बना लेते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी. ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर. You should go through it. So what the Sandeep Maheshwari is delivering, so that is concise, and he is delivering in a very easy language that is easily understandable by all the audience who are attending his seminar. So Sandeep Maheshwari, अगर कभी आपको मौका पड़े तो संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखिएगा. ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर. काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे उन्होंने वीडियोस बनाए हैं. यू शुड गो फॉर इट, द वीडियो ऑफ संदीप माहेश्वरी. सो द वीडियोस ऑफ संदीप माहेश्वरी कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ कंसाइज, कि वो जो भी बोलते हैं बहुत ही सरल शब्दों में बोलते हैं और टू द पॉइंट बोलते हैं, और जिससे ऐसे बोलते हैं कि जो ऑडियंस का कनेक्ट है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बना रहता है, और द ऑडियंस बोर फील भी नहीं करते हैं. सो द कंटेंट, द डिलीवरिंग कंटेंट ऑफ संदीप माहेश्वरी कैन बी डिस्कस्ड इन द पॉइंट ऑफ कंसाइज. अगर आपका मैसेज शॉर्ट है, टू द पॉइंट है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द रिसीवर्स अटेंशन. रिसीवर उसको बहुत ही ध्यान से सुनेगा. And it helps in saving the time and cost of receiver as well as the sender. It underlines and highlights the main message as it avoids using excessive and needless words. कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं that is not actually required in delivering the content. So always make sure whatever the content you are delivering, the use of words should be good and proper. Not too many words, not too excessive words should be used during the content or delivering the content in the form of communication to the receiver. Concise communication provides short and essential message in limited words to the audience. Whatever you want to say, just say it should be brief and short. Concise message is more appealing and comprehensive to the audience. Yes, audience जो है वो ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, because people are used to be very busy during a nowadays. तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी बहुत लंबी लंबी स्पीच सुने या आपका बहुत लंबा कम्युनिकेशन सुने. So always try to communicate in a limited and short word. Concise message is not repetitive in nature, कि आप जो भी कहना चाहते हैं that should not be repeated. Once you have used, it should not be repeated again and again. So that is known as concise. Concise means the content which you are delivering, that should be to the point. There should be use of least words, not improper words, which helps in receiving the attention of the receiver. Sixth is consideration. The sender must make into consideration the receiver's opinions, knowledge, mindset, background, etc. in order to have an effective communication. कि आपने जिसके लिए भी मैसेज बनाया है, एक्चुअली वो क्या चाहता है. यू शुड ऑलवेज कीप इनटू कंसिडरेशन द ओपिनियन, द माइंडसेट ऑफ द रिसीवर, कि वो रिसीवर एक्चुअली में क्या चाहता है. आप जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं रिसीवर को, क्या एक्चुअली वो उसके काम का है भी या नहीं, या वो उसका वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है. सो ऑल दीज ओपिनियंस you have to take into consideration if you are in a mood to make the communication effective.
कि सेंडर क्या चाहता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसके बैकग्राउंड माइंड में क्या चल रहा है. अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, इफ़ यू हैव considered all these things during your communication process, then it helps in making the communication effective. For example, कि during my explanation I am using Hindi and English both. Why? Because कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली इंग्लिश का लेक्चर चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हिंदी और इंग्लिश मिक्स चाहिए. तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ड्यूरिंग माई एक्सप्लेनेशन आई यूज़ टू यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. आई 80% इंग्लिश एंड 20% हिंदी. कि मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन इज़ इन इंग्लिश एंड द क्रक्स ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन आई यूज़ टू गिव इन हिंदी, so that all the audience, all type of audience are comfortable to understand what actually I am going to deliver in this lecture. In order to communicate, the sender must relate to the target recipient and be involved. Whatever the sender wants to communicate, the sender should target to the recipient. Sender का target होना चाहिए रिसीवर पर, कि जो भी वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है तो वो कंटेंट किसको डिलीवर होना चाहिए और किस वे में होना चाहिए, इस पे उसका टारगेट होना चाहिए. सो दैट इज नोन एज द टारगेट ऑडियंस. एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच. नेवर यूज आई during your communication. Always use you approach. You approach means कि जिसमें आप एड्रेस करेंगे ऑडियंस को. That you should use like this, you should be like this. That means you are addressing the audience and some way or the other आप ऑडियंस को कुछ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तो जब आप ऑडियंस को इम्पोर्टेंस देंगे, उनके ऊपर एम्फोसिस करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो कनेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा. इट हेल्प इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव कनेक्ट बिटवीन द रिसीवर एंड द सेंडर ऑफ द मैसेज. सो ऑलवेज एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच, नॉट आई अप्रोच. एम्फसाइज विद द ऑडियंस एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस. ट्राई टू show in your communication that you are for the audience and with the audience. This will stimulate a positive reaction from the audience. कि अगर आप ऑडियंस को साथ लेकर चलेंगे, ऑडियंस से कनेक्ट बना के चलेंगे, तो ऑडियंस का भी आपके प्रति क्या होगा, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस for the content which you want to communicate. Example KBC, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अमिताभ बच्चन इज द होस्ट, लेकिन वो ऑडियंस से स्टार्टिंग से ही कनेक्ट बना के चलते हैं. और आपने देखा होगा कि वो एपिसोड आता है, शायद 1 घंटे का एपिसोड आता है, तो वो 1 घंटा कहाँ निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता. बिकॉज द वे ही इज़ हैंडलिंग द शो इज़ रियली मार्वलस. वो वहाँ की बैठी हुई ऑडियंस से भी कनेक्ट बनाते हैं, वो जो टीवी देख रहे हैं उनसे भी कनेक्ट अच्छा होता है, और जो हेल्पर्स होते हैं उनसे भी कनेक्ट अच्छा होता है. सो KBC में जिस तरह का कम्युनिकेशन इज बीइंग यूज्ड बाय अमिताभ बच्चन, सो दैट इज मार्वलस. तो उसमें आप देखिएगा कि अब जब भी आप KBC देखें, तब ये देखिएगा ये जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, क्या वो उनके कम्युनिकेशन में है या नहीं है. बिल्कुल है. आपने देखा होगा जैसे वो एंट्री करते हैं तो खड़े होकर ताली बजाकर वेलकम करते हैं वो ऑडियंस का, फिर वेलकम करते हैं पार्टिसिपेंट्स का,
और फिर वेलकम करते हैं उन ऑडियंस का जो टीवी पे उन्हें देख रही हैं। सेकेंड थिंग वो क्या है कि जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें वो सारी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। एड्रेस इन द सेंस दैट ही यूज टू डिस्कस अबाउट द place from where the participants are coming. They used to discuss about the profession to which they belong और कहाँ से वो आए हैं, उनकी पढ़ाई कितनी है, तो इन सारे फ्रंट पे। और फिर वो एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बना के दिखाते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स का जो हॉट सीट पर आते हैं। So what is this? This is a example, a live and best example of 7 C's of communication। कि अब जब भी आप KBC देखेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि मैम ने 7 C's of communication में KBC के होस्ट अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल दिया था कि वो किस तरह से ऑनलाइन ऑडियंस और ऑफलाइन ऑडियंस से कनेक्ट बनाते हैं, पार्टिसिपेंट से कनेक्ट बनाते हैं, और जो हॉट सीट पे बैठते हैं उनसे कनेक्ट बनाते हैं, और उनकी फैमिली से भी कनेक्ट बनाते हैं बाय वेलकमिंग द फैमिली ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द हॉट सीट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सारा कम्युनिकेशन का ही तो खेल है। अगर वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या ये शो चलेगा? कोई नहीं देखेगा। बट द TRP ऑफ KBC is doing well only with the way of communication which he is using in his episodes. So that can be the best and marvelous example of 7 C's of communication. That means आपने देखा होगा कि जो कंसिडरेशन में पॉइंट है वो सारा उनकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होता है। वो हमेशा ऑडियंस को लेके चलते हैं। दैट मीन्स ही ऑलवेज एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच। नेक्स्ट इज एम्फसाइज विद द ऑडियंस एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस। वो ऑडियंस में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है और ऑडियंस पोल होता है, तो उसमें वो ऑडियंस से विनती करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट द ऑडियंस आर फॉर द पार्टिसिपेंट और फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द हॉट सीट। So these are some of the factors that should be taken into consideration while communicating in an effective manner. Show optimism towards your audience. जो उनकी ऑडियंस है, KBC की जो ऑडियंस होती है उसको वो हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं, वेलकम करते हैं। So that means he is optimized, he is having a optimism gesture towards his audience. Emphasize on what is possible rather than what is impossible. आप जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको डिस्कस करिए इन स्पाइट ऑफ डिस्कसिंग इम्पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल को डिस्कस करेंगे तो द ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू टेक एनी इंटरेस्ट इन योर कम्युनिकेशन एंड द कम्युनिकेशन कैन ब्रेक इन बिटवीन. So always try to have more focus on what is possible rather than what is impossible. Lay stress on positive words such as jovial, committed, warm, healthy, help, etc. आप हमेशा स्ट्रेस पॉजिटिव वर्ड्स पे दीजिए, जैसे कि कमिटमेंट है, वार्म है, हेल्दी है, हेल्प है। इन सारे वर्ड्स पे आप ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए। स्ट्रेस मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। KBC में आप देखिएगा कि स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक का जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ टू द पॉइंट, दैट इज़ एंटरटेनिंग, दैट इज़ नॉलेजेबल, दैट इज़ टारगेट, सब कुछ होता है उसमें। सो the communication is only be effective if you are emphasizing on what is possible rather than what is impossible. Try to use you approach, try to have more focus on the words which is related with commitment, warm, healthy and help. So these are some of the points which should be considered once you are communicating with the person. Courteous.
It implies that the sender must take into consideration both the feelings and viewpoints of the receiver such that the message is positive and focused at the audience. Courteous means whatever the sender wants to convey, so at the time of conveying the message, he should take into consideration the feelings and the viewpoints of the receiver. तो जो भी आपका मैसेज है उसको पॉजिटिव अप्रोच में लिया जाएगा ऑडियंस में. तो जितने भी रियलिटी शो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें द होस्ट हैव मोर फोकस ऑन the feelings and viewpoints of the audiences. This helps in making the direct connect with the audience. The message should not be biased and much include the terms that show respect for the recipient. कोई भी biased word, कोई भी biased statement आप communication में use नहीं करेंगे. और message में you should always use the word which shows a respect for the recipient. Courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as feelings of the receivers of the message. Courteous messages is positive and focused at the audience. It makes use of terms showing respect for the receiver's message. That means whatever the content you are delivering, that should be easily acceptable and available. So that's all for this session. Thank you, class.